So, hi everyone, welcome back to the channel Pooja Narang's Physics Classes. I am again back here with a new video, and the video is about a new summer research program. The summer research program is at BITS Pilani, Goa campus 2025. Here, the full form of BITS is Birla Institute of Technology and Science, Pilani. KK Birla Goa campus invites application from academically bright and motivated masters, integrated masters, bachelor students outside BITS Pilani for BGSRP summer research program. So, what is the purpose of this summer research program? The summer research program provides opportunity to the students of engineering, science, economics, finances, humanities, and social sciences to spend 2 months during the summer to work on research project in supervision of faculty members of WITS Pilani KK Birla Goa campus. So friends, I want to tell you just again, as I already told in my previous videos on summer research in programs, that what is the purpose of a summer research program. देखिए, we are graduate student, postgraduate student or PhD students. All of us are almost vacant in the summertime, like when exams are over, after that in May, June, almost we are all vacant, we all have time. So to utilize our time in this time, May, June, July, the prestigious institutes in India organize a summer research program to give you information and some hands-on experience about the research. तो रिसर्च के बारे में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको देने के लिए समर रिसर्च प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. दे आर ऑर्गेनाइज टू टेल यू अबाउट द रिसर्च, टू गेट यू an information and a experience of the research, so that you may know if you want to pursue your career in the research or not, because some students go to research and then they are not able to continue, and some don't even get a chance, and some don't even try. So to know to let them know that what they are doing and how they can do it, how they can get benefit from it, and how to do it. So this is the main purpose of summer research program. So if you have a chance, you must go through it. You must know about the research experience and how to do it, and get a hands-on experience for a short span of time. Like some at some places it is of 15 days, some 1 month, and some 1 or 2 months. It depends on your working time, that how much time you have, how much time your exams allow you to participate. All right. So there is a link given here. We will go to the complete website also. वेबसाइट पे हम जाएंगे and we will see the complete details about it. And if you like my content, please do subscribe the channel for more information, like the video, and to know about it, you can also contact me. You can also comment in the comment box. So now let's go to the link. This link I will provide you in the description box. There you can click on it. Look at this, BITS Pilani Goa Summer Research Program 2025. Means 25. The 2025 BGSRP program is up. Interested students may apply to this program using the link. You can also click here on this link. तो यहाँ पर क्लिक करने से आप एप्लीकेशन लिंक पर पहुंच जाएंगे. Read carefully the eligibility criteria, general instructions, important dates before applying this program. तो जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हम पढ़ेंगे. एक बार एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. Here are the general instructions. First of all, it is eligibility, and then we will go to general instructions. Who are pursuing graduation, post-graduation, research programs in the disciplines of science, technology, which are relevant to BITS Pilani programs to interact with scientists and engineers on the campus. इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं. इंटर्न्स में बेनिफिट फ्रॉम एक्सपोजर टू रिसर्च इंस्टीट्यूट फंक्शनिंग एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट एक्टिविटीज. To allow young academic talent to be associated with BITS Pilani scientists for mutual learning benefits. आप साइंटिस्ट लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ अच्छा आपको जानने को मिलेगा. The program will be in an offline mode at BITS Goa campus during the summer. Please note that the only a limited number of seats are there, limited number of projects are there.
So here you can see it is list of BGSRP shortlisted candidates. But when you click here, you will reach to the projects available. जो भी projects available है आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ पर कोई स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको खुद पे करने पड़ेंगे। Topics have been given there. Last date for applying is 22nd March 25। तो टाइम पड़ा है, ये सोच के प्लीज 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 टाइम वेस्ट मत करना। ऊपर यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इफ आई क्लिक ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इट इज गिवन हियर। ओके, तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पहुंच जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, देन यू विल रीच ऑन द इंपॉर्टेंट डेट्स। ये जो लिंक है यहाँ पर वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसी लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। सो लुक एट दिस इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है यहाँ पर। इट इज सबसे पहले तो लास्ट डेट क्या है, 22 मार्च 25। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर भेज सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर दैट एप्लीकेशन रिसीव्ड अलोंग विद द बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स will be for evaluation. Incomplete applications will not be entertained, and list of selected candidates will be uploaded on first week of April 25, and selected candidates need to report first week of June। जून के फर्स्ट वीक में आपको वहां पहुंचना होगा। वीडियोस है, अगर आप कहीं पे कुछ जानना चाहते हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप उनको। सो दिस इज एन ओवरव्यू। यहाँ पर कुछ डिवाइसेस, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं लैब्स के, वो दिखाए गए हैं। वीडियोस हैं जो कि आपको रिसर्च एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी वीडियोस हैं। लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं, फीडबैक वीडियोस आर देयर। So you can know the complete details from the link I will provide you in the description box. Please do like, share and subscribe. Thank you so much for watching the video. Thank you so much.